Hello and welcome everyone. Is my voice clear and audible? Haji, clear and audible. Thank you so much, sister. Okay, so we'll begin with a short meditation. Sit back and relax. Withdraw your attention from the outside world and bring it to yourself. Take a deep breath in, and as you exhale, imagine any tension, any stress, any worry leaving your body. Allow yourself to let go. As you breathe, imagine yourself surrounded by a warm, comforting light. This light represents inner peace and calmness. As you inhale, imagine this light filling your body, nourishing your mind, heart, and soul. As you exhale, imagine any doubts, fears, or worries leaving your body. Repeat the phrase, I am at peace to yourself. Feel the truth of these words resonating deep within your being. Remember, inner peace is always available to you. It's a state of being that you can cultivate and return to whenever you need it. Rest in this peaceful awareness, allowing it to guide you in all aspects of your life. Okay, thank you so much. So we'll begin with today's session. I'll just share the screen. Okay, so today we are going to continue from negativity and suffering have their roots in time. And this is from page number 59, PDF. It's just a continuation of the chapter 3. Okay. Negativity and suffering have their roots in time. So the seeker is asking, but the belief that the future will be better than the present is not always an illusion. The present can be dreadful, and things can get better in the future, and often they do. Usually, the future is a replica of the past. Superficial changes are possible, but real transformation is rare and depends on whether you can become present enough to dissolve the past by assessing the power of the now. तो यहाँ पे ऑथर क्या कह रहे हैं कि फ्यूचर जो होता है हमारा वो यूजली पास्ट का ही रेप्लिका होता है जैसे हमने पास्ट में चीजें की हैं अगर हम सेम पैटर्न पे चलेंगे तो वो इट विल बी द सेम एज व्हाट वी डिड इन द पास्ट बट ट्रांसफॉर्मेशन कब होगा व्हेन वी बिकम मोर प्रेजेंट
जब हम अपनी लाइफ में प्रेजेंस लाएंगे तब हम अपना फ्यूचर बेटर कर सकते हैं। जब हम अंडरस्टैंड करेंगे, अपने आप में अवेयरनेस बिल्डअप करेंगे। What you perceive as future is an intrinsic part of your state of consciousness now. If your mind carries a heavy burden of past, you will experience more of the same. The past perpetuates itself through lack of presence. The quality of your consciousness at this moment is what shapes the future, which of course can only be experienced as the now. तो जो हमारी कॉन्शियसनेस अब है, जो हमारी थिंकिंग, हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा प्रेजेंस, जितना हम आज प्रेजेंट रहेंगे, जितना हम अपनी अवेयरनेस, अपने थॉट्स पे ध्यान देंगे, जितना हम पास्ट से डिटैच करेंगे, उतना हमारा फ्यूचर बेटर होगा। इट दैट इज व्हाट विल शेप आवर फ्यूचर। जो हमारा अब होगा, द वे वी द वे आवर कॉन्शियसनेस इज नाउ एट दिस मोमेंट, दैट इज व्हाट आवर फ्यूचर विल बी। You may win, you may win 50 million, but that kind of change is no more than skin deep. You would simply continue to act out the same conditioned patterns in more luxurious surroundings. Humans have learned to split the atom. Instead of killing 10 or 20 people with a wooden club, one person can now kill a million just by pushing a button. Is that real change? If it is the quality of your consciousness at this moment that determines the future, then what is it that determines the quality of your consciousness? तो ऑथर ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एक तो ऑथर कह रहे हैं कि जब हम एक अगर हमने से 50 मिलियन हम जीत गए, तो उससे क्या होगा? हमारा जो पैटर्न है वो तो सेम ही होगा। सिर्फ ये होगा कि हम थोड़ा थोड़ी लग्जरी सराउंडिंग्स में होंगे, बिकॉज वीव गॉट ऑल दिस मनी टू स्पेंड, बट आवर कॉन्शियसनेस इज स्टिल द सेम। तो वही ऑथर ने क्वेश्चन पूछा है कि अगर आपका जो कॉन्शियसनेस है, अगर वो फ्यूचर डिसाइड करता है, तो व्हाट एक्चुअली डिटर्मिन्स द क्वालिटी ऑफ योर कॉन्शियसनेस? तो उसका आंसर क्या है? योर डिग्री ऑफ प्रेजेंस. So the only place where true change can occur and where the past can be dissolved is the now. All negativity is caused by an accumulation of psychological time and denial of the present. Unease, anxiety, tension, stress, worry, all forms of fear are caused by too much future and not enough present. Guilt, regret, resentment, grievances, sadness, bitterness, and all forms of non-forgiveness are caused by too much past, not enough present. तो अगर हम अपने आप को नोटिस करें, हमारे अगर हमारे इमोशंस कैसे चल रहे हैं, अगर हम एंजाइटी, टेंशन, फियर ये सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो व्हाट इज द कॉज ऑफ इट? बिकॉज हम बहुत ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, तभी हम ये सब फीलिंग्स को इमोशंस फील कर रहे हैं, स्ट्रेस के, फियर के, बिकॉज वी आर वरिड अबाउट द फ्यूचर। और अगर हम गिल्ट, रिजेंटमेंट, सैडनेस, नॉन फॉरगिवनेस, जो भी पास्ट में हुआ उसको होल्ड ऑन कर रहे हैं, तो हम ये सब इमोशंस फील कर रहे हैं, गिल्ट और रिग्रेट के। तो बोथ ऑफ दीज आर शोइंग, तो इससे हम अपने आप को जज कर पाएंगे कि हमारे अंदर कौन से थॉट्स चल रहे हैं, पास्ट के या फ्यूचर के। Most people find it difficult to believe that a state of consciousness totally free of all negativity is possible. And yet, this is the liberated state to which all spiritual teachings point. It is the promise of salvation, not in an illusory future, but right here and now. तो वही ऑथर कह रहे हैं कि मतलब बहुत डिफिकल्ट लगता है लोगों को बिलीव करना कि
हमारा जो कॉन्शियसनेस है, हमारी जो थॉट्स इमोशंस है, उसमें कोई नेगेटिविटी ना हो, ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता, इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट यही सारी टीचिंग्स को पॉइंट करती है, जो लिबरेशन हमें मिलेगा, जो कहते हैं ना, लिविंग लाइफ, हाउ वी कैन फील लिबरेटेड, दैट इज थ्रू दिस। और सारी स्पिरिचुअल टीचिंग्स भी इस पॉइंट की तरफ ही इशारा देती है, is to be free from all negativity, to live in the now. You may find it hard to recognize that time is the cause of your suffering or your problems. You believe that they are caused by specific situations in your life, and seen from a conventional point of view, this is true. But until you have dealt with the basic problem, making dysfunction of the mind, its attachment to past and future, and denial of the now, problems are actually interchangeable. If all your problems or perceived causes of suffering or unhappiness were miraculously removed for you today, but you had not become more present, more conscious, you would soon find yourself with a similar set of problems or causes of suffering, like a shadow that follows you wherever you go. तो ऑथर वो कह रहे हैं कि अगर हमारी लाइफ से सारी प्रॉब्लम्स हट भी जाए, कुछ मिरेकल हो जाए और जो भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, सिचुएशंस है, वो सब हट जाए, बट अगर हम फिर भी प्रेजेंट ना होए, अगर हम फिर भी कॉन्शियस ना होए, तो क्या होगा? इट विल कम बैक अगेन, वो सारी प्रॉब्लम्स दोबारा आ जाएंगी, जैसे ऑथर ने एग्जाम्पल दिया है, जस्ट लाइक अ शैडो फॉलोज अस, so they will never go, they will keep following us. Ultimately, there is only one problem, the time bound mind itself. The seeker कह रहा है, I cannot believe that I could ever reach a point where I am completely free of my problems. The author कह रहा है, you are right. You can never reach that point because you are at that point now. वाओ, ये भी कितनी इम्पोर्टेंट लाइन है कि we don't have to reach that point, we are at it now, at this present moment there are no problems. There is no salvation in time. You cannot be free in the future. Presence is the key to freedom, so you can only be free now. Underline, presence is the key to freedom. Okay, finding the life underneath your life situation. I don't see how I can be free now. As it happens, I'm extremely unhappy with my life at the moment. This is a fact, and I would be deluding myself if I tried to convince myself that all is well when it definitely isn't. To me, the present moment is very unhappy. It is not liberating at all. What keeps me going is the hope or possibility of some improvement in the future. तो जैसे ये सीकर अपना एक बता रहे हैं कि एट द मोमेंट कह रहे हैं कि मैं इतना अनहैप्पी हूँ, तो हाउ कैन आई फील फ्री, एंड हाउ कैन आई कन्विंस माई सेल्फ कि सब कुछ ठीक है जब नहीं है ठीक, जब मैं बहुत अनहैप्पी हूँ, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा, और मुझे क्या मुझे थोड़ा सा हेल्प करता है वो होप, कि फ्यूचर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई एम जस्ट लिविंग ऑन दैट होप कि फ्यूचर में सब ठीक हो जाएगा। तो ऑथर कह रहे हैं, यू कैन थिंक दैट योर अटेंशन इज इन द प्रेजेंट मोमेंट when it's actually taken up completely by time. You cannot be unhappy and fully present in the now. What you refer to as your life should more accurately be called your life situation. तो जब हम ये कहते हैं ना, मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है, कुछ भी ठीक नहीं है, वो एक्चुअली हमारी लाइफ नहीं है, इट्स जस्ट अ सिचुएशन, इट्स जस्ट अ पार्ट, that is playing in the life, it is not your life. तो ये डिफर करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि what is your life and what is your life situation. It's a psychological time.
Past and future. Certain things in the past didn't go the way you wanted them to go. You are still resisting what happened in the past, and now you are resisting what is. तो पास्ट में क्या हुआ उसको हम resist कर रहे हैं अभी भी, और उससे क्या हो रहा है जो अब प्रेजेंट में हो रहा है उसको भी हम resist कर रहे हैं, जो पहले भी resist किया अब भी resist कर रहे हैं. Hope is what keeps you going, but hope keeps you focused on the future. And this continued focus perpetuates your denial of the now and therefore your unhappiness. तो जब हम ये होप करते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, हम तभी भी फ्यूचर पे ध्यान दे रहे हैं, प्रेजेंट में नहीं ध्यान दे रहे. तो दैट्स व्हाई वो अनहैप्पीनेस और वो contentment आती नहीं है, because we are just focused on the future. It is true that my present life situation is the result of things that happened in the past, but it is still my present situation, and being stuck in it is what makes me unhappy. तो सीकर कह रहा है कि हाँ ये सच है कि मेरी प्रेजेंट लाइफ सिचुएशन है, बट बट अभी भी तो वो है, और उसमें रहने से अनहैप्पी फीलिंग हो रही है. Forget about your life situation for a while and pay attention to your life. This is also an important line कि अगर आप भूल जाओ अभी at the moment क्या हो रहा है, just focus on your life. What is the difference? Your life situation exists in time. Your life is now. Your life situation is mind stuff. Your life is real. So जो भी life situation है, it's all just in the mind. You know, the life is what is real, what is, what I am, who I actually am, not the situation that's going on. Find the narrow gate that leads to life. It is called the now. Narrow your life down to this moment. Your life situation may be full of problems. Most life situations are. But find out if you have any problem at this moment. Not tomorrow or in 10 minutes, but now. Do you have a problem now? When you are full of problems, there is no room for anything new to enter, no room for a solution. So, whenever you can, make some room, create some space so that you find the life underneath your life situation. तो वही ऑथर कह रहे हैं जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में चल रही होती है, सिचुएशन लाइफ सिचुएशन हो रही होती है, इतनी प्रॉब्लम्स होती है, तो उसमें और कुछ नजर नहीं आता. तो वही ऑथर समझा रहे कि उसमें एट दैट टाइम ट्राई टू फोकस ऑन योर लाइफ, क्रिएट सम स्पेस. जो लाइफ सिचुएशन ऊपर ऊपर से जो चल रहा है, बट व्हाट एक्चुअली यू आर, उसके लिए थोड़ा सा आप अपने आप पे ध्यान दें. Use your senses fully. Be where you are. Look around. Just look, don't interpret. See the light, shapes, colors, textures. Be aware of the silent presence of each thing. तो ऑथर ये समझा रहे हैं कि at that time just sit in silence and just observe everything around you. Be aware of the space that allows everything to be. Listen to the sounds, don't judge them. Listen to the silence underneath the sounds. Touch something, anything, and feel and acknowledge its being. Observe the rhythm of your breathing. Feel the air flowing in and out. Feel the life energy inside your body. Allow everything to be within and without. Allow the isness of all things. Move deeply into the now. तो यहाँ पे ऑथर वही कह रहे हैं कि जैसे बहुत बर्डन लग रहा है कोई भी लाइफ सिचुएशन से, तो आप थोड़ा टाइम साइलेंस में बैठो, अपने आसपास के सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करो,
साइलेंस में बैठो एंड जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, जस्ट लुक एट द थिंग्स अराउंड यू और उसकी एसेंस को आप फील करिए, दैट विल हेल्प यू become more present. You are leaving behind the deadening world of mental abstraction of time. You are getting out of the insane mind that is draining you of life energy, just as it is slow poisoning and destroying the earth. You are awakening out of the dream of time into the present. ऐसा करने से आप जो भी वो लाइफ सिचुएशन से पास्ट से फ्यूचर से जो होने वाला है उससे हटके आप बिल्कुल प्रेजेंट में आ रहे हैं। तो वही ऑथर कह रहे हैं, यू आर अवेकनिंग फ्रॉम द ड्रीम ऑफ टाइम. All problems are illusions of the mind. It feels as if a heavy burden has been lifted, a sense of lightness. I feel clear, but my problems are still there waiting for me, aren't they? They haven't been solved. Am I not just temporarily evading them? तो ये भी होता है कि जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं या साइलेंस में बैठते हैं, तो वो जो भी 5-10 मिनट्स 15 मिनट्स उस टाइम बहुत ब्लिसफुल फील होता है. बट एज सून एज इट्स टाइम टू गेट अप और एज सून एज वी रियलाइज कि नहीं, अभी भी तो ये सिचुएशन है, अभी भी इसके साथ डील करना है. तो यही सीकर भी ऑथर से यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि उस टाइम तो लाइट फीलिंग हो रही है बट वो प्रॉब्लम तो अभी भी है, इट्स नॉट सॉल्व. तो ऐसा तो नहीं है कि मैं खाली टेम्परेली उससे बाहर निकल रहा हूँ. तो अभी ऑथर समझा रहे हैं, इफ यू फाउंड योर सेल्फ इन पैराडाइज इट वुडेंट बी लॉन्ग बिफोर योर माइंड वुड से yes, but ultimately this is not about solving your problems. It's about realizing that there are no problems, only situations to be dealt with now, or to be left alone and accepted as part of the isness of the present moment until they can change or can be dealt with. Problems are mind made and need time to survive. They cannot survive in the actuality of the now. तो ऑथर ये कह रहे हैं कि अगर हम अपने आप को हम पैराडाइज में भी बैठे हो तो भी थोड़े टाइम बाद माइंड बोलेगा कि नहीं ये तो ठीक है बट ये प्रॉब्लम तो है, बिकॉज द माइंड इज कॉन्स्टेंटली जस्ट फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम्स और बस वही चल रहा है माइंड में. तो ऑथर वही समझा रहे हैं कि it's not about realizing that it's not about solving your problem. ये realize करना है कि there are no problems. Situations है but उसको उसको उस पे भी काम करना है, जो भी situations है उन पे हमें काम करना है, but वो acceptance भी लानी है present moment की. और जो भी problems है भी वो सब mind made है. It's all just in the mind. तो जब हम प्रेजेंट में रहेंगे, एक्सेप्टेंस लाएंगे, तो we'll get the ideas of how to deal with the situations as well. Focus your attention on the now and tell me what problem you have at this moment. I am not getting any answer because it is impossible to have a problem when your attention is fully in the now. A situation that needs to be either dealt with or accepted, yes. Why make it into a problem? Why make anything into a problem? Isn't life challenging enough as it is? Why do you need problems for? What do you need problems for? The mind unconsciously loves problems because they give you an identity of sorts. तो वही ऑथर कह रहे हैं कि जो माइंड है उसको बहुत अच्छा लगता है प्रॉब्लम्स पे ही सारा टाइम सोचते रहना. बट इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, हमें वी हैव टू लुक एट इट एज अ सिचुएशन, कि सिचुएशन के साथ डील करना है या जो भी हो रहा है एक्सेप्टेंस लानी है, बट उसको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना, उसको एज अ प्रॉब्लम नहीं देखना है हमें. दिस इज नॉर्मल,
The mind unconsciously loves problems because they give you an identity of sorts. This is normal and it is insane. Problem means that you are dwelling on a situation mentally without there being a true intention or possibility of taking action now, and that you are unconsciously making it part of your sense of self. You become so overwhelmed by your life situation that you lose your sense of self, of being, or you are carrying in your mind the insane burden of 100 things that you will or may have to do in the future instead of focusing your attention on the one thing that you can do now. तो ऑथर कह रहे हैं कि हम इतना ज्यादा अपना हमने वो प्रॉब्लम पे इतना ज्यादा ध्यान दिया है कि हम ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं वो लाइफ सिचुएशन पे बिकॉज वी यूज द वर्ड प्रॉब्लम तो एंड जो इतना ज्यादा हम ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि हम एक्चुअली है कौन वी आर नॉट दीज प्रॉब्लम्स वी आर नॉट दिस माइंड नॉट दीज सिचुएशंस दे आर ऑल जस्ट पार्ट of the life situation. This is not life, so we forget who we actually are. Okay, just give me a moment. Okay, so when you create a problem, you create pain. All it takes is a simple choice, a simple decision. No matter what happens, I will create no pain for myself. I will create no more problems. Although it is a simple choice, it is also very radical. You won't make that choice unless you're truly fed up with suffering, unless you have truly had enough. तो ऑथर वही कह रहे हैं कि जब भी हम माइंड में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वी क्रिएट पेन तो व्हाट तो इट इट जस्ट टेक्स अ सिंपल चॉइस हमें सिर्फ एक अपने माइंड को ये ट्रेन करना है कि नो मैटर व्हाट हैपेंस मैं अभी कोई पेन नहीं क्रिएट करूंगी कोई प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करूंगी बट वही है कि वो हम चॉइस तब लेते हैं जब इतनी ज्यादा सफरिंग होती है कि it becomes too much for us to take and you won't be able to go through it unless you access the power of the now. If you create no more pain for yourself, then you create no more pain for others. You also no longer contaminate the beautiful earth, your inner space, and the collective human psyche with the negativity of problem making. तो जब हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि और हम अपने माइंड को ट्रेन करते हैं प्रेजेंट में आते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि जो है इट्स जस्ट पार्ट ऑफ द लाइफ सिचुएशन इट्स जस्ट टेम्पररी
it's not a problem. So we are not only just, not creating any pain for ourselves, but we are also, not creating pain for anybody else as well. मतलब हम खुद को तो हेल्प कर ही रहे हैं और जो हमारे आसपास है हम उनके लिए उनको भी बेनिफिट कर रहे हैं. So that's why the author is saying कि we don't, contaminate the earth, our inner space, and the collective human psyche. It all starts from us, how we think. जैसे कहते हैं self transformation leads to world transformation. So it starts from us. So we need to start changing our thinking now. We need to bring in more self-awareness, more consciousness of the present. Then we'll be able to collectively change the, entire thinking of the planet. So it all starts with our own way of thinking. If you have ever been in a life or death emergency situation, you will know that it wasn't a problem. The mind didn't have time to fool around and make it into a problem. In a true emergency, the mind stops, you become totally present in the now, and something infinitely more powerful takes over. This is why there are many reports of ordinary people suddenly becoming capable of incredibly courageous deeds. In any emergency, either you survive or you don't. Either way, it is not a problem. तो वही ऑथर कह रहे हैं कि जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है लाइफ और डेथ की तभी द माइंड डजंट हैव टाइम टू थिंक ऑफ इट एज अ प्रॉब्लम इट द माइंड स्टॉप्स एट दैट टाइम और फिर उस टाइम हम फुली प्रेजेंट होते हैं बिकॉज माइंड टाइम नहीं है टू कीप थिंकिंग एंड ड्वेलिंग ऑन थिंग्स तो वी हैव टू टेक अ डिसीजन एंड वही ऑथर कह रहे हैं कि उस टाइम पे we become brave and we take courageous decisions. So because we either survive or we don't. So at that time, that is not a problem. Some people get angry when they hear me say that problems are illusions. I am threatening to take away their sense of who they are. They have invested much time in a false sense of self. For many years, they have unconsciously defined their whole identity in terms of their problems or their suffering. Who would they be without it? वही ऑथर कह रहे हैं कि लोगों को गुस्सा आ जाता है अगर हम बोलें कि ये जो आप प्रॉब्लम्स कह रहे हो ना सब इल्यूजन्स है दे आर नॉट ट्रू बिकॉज उनको लगता है वो उनकी आइडेंटिटी है क्योंकि इतना टाइम उन्होंने उस थॉट प्रोसेस में स्पेंड किया है इतना इनग्रेव्ड हो गया है उनके अंदर इट्स बिकम सो डीप रूटेड कि उनको लगता है वो दैट इज व्हाट दे आर तो उसके बिना फिर वो क्या होंगे. A great deal of what people say, think, or do is actually motivated by fear, which of course is always linked with having your focus on the future and being out of touch with the now. As there are no problems in the now, there is no fear either. तो वही ऑथर कह रहे हैं कि जो लोग कहते हैं बहुत कुछ fear driven भी होता है. So fear is something to do with the future, जो फ्यूचर में होने वाला है उसके बारे में सोच के हम डरते हैं. तो that is and then जब हम we come in the present there are no problems so there are no fear जितना ज्यादा हम present रहेंगे fear भी नहीं होगा. Should a situation arise that you need to deal with now, your action will be clear and incisive of if it arises out of present moment awareness. It is also more likely to be effective. तो जितना ज्यादा हम प्रेजेंट रहेंगे कोई भी सिचुएशन आएगी तो हमें बहुत इजी होगा उसके साथ डील करना. It will not be a reaction coming from the past conditioning of your mind, but an intuitive response to the situation. In other instances, when the time bound mind would have reacted,
you will find it more effective to do nothing. Just stay centered in the now. A quantum leap in the evolution of consciousness. I have had glimpses of the state of freedom from mind and time that you describe, but past and future are so overwhelmingly strong that I cannot keep them out for long. तो ये सब हमने भी एक्सपीरियंस किया है कि थॉट्स इतने ज्यादा आते हैं, इतने ओवरवेलमिंग होते हैं कि हम उससे बाहर रह नहीं पाते. The time-bound mode of consciousness is deeply embedded in the human psyche. But what are we doing here is part of a profound transformation that is taking place in the collective consciousness of the planet and beyond. The awakening of consciousness from the deep dream of matter, form, and separation. The ending of time. We are breaking mind patterns that have dominated human life for eons. मतलब इतने जन्मों से ये जो कॉन्शियसनेस है हमारी चल रही है कि वो इतनी डीप रूटेड हो गई है. यू नो जो जो ये थॉट प्रोसेस है कॉन्स्टेंटली पास्ट और फ्यूचर में जो टाइम बाउंड है, तो वही ऑथर कह रहे हैं जो हम अब कर रहे हैं ये ये बुक्स पढ़ के ये अवेयरनेस में आके मोर सेल्फ कॉन्शियस होके वी आर जस्ट नॉट ट्रांसफॉर्मिंग आवर सेल्व्स बट we are being a part of the change in the collective consciousness of the planet. So this is so profound अगर हम ये अंडरस्टैंड करें कि कितना इम्पोर्टेंट है इस टाइम पे अपने आप पे वर्क करना, अपनी अवेयरनेस और बढ़ाना. The ending of time. We are breaking mind patterns that have dominated human life for eons. Mind patterns that have created unimaginable suffering on a vast scale. I am not using the word evil. It is more helpful to call it unconsciousness or insanity. So I think we'll end over here today. So I'll just share the questions with you. Okay. तो आज के questions हैं. Have you experienced situations that have triggered reactions with a strong emotional charge? How have you dealt with it in the past? What have you learned today about dealing with such situations? तो कोई situations आपने experience की है जहाँ पे आपको लगा है कि आपने emotionally बहुत strongly react किया हो. तो आज की रीडिंग के बाद आपको कैसे लगता है, आप कैसे डील कर सकते हो सिचुएशन से? So the second question is, what did you understand by the terms clock time and psychological time? According to the author, how can we learn to use clock time and prevent the build-up of psychological time? तो ये हमने कल के सेशन में कवर किया था, क्लॉक टाइम और साइकोलॉजिकल टाइम के बारे में. Third question है, according to the author, presence is the key to freedom. So you can only be free now. What do you feel about this? How can you implement feeling free and liberated? तो हम कैसे अपने आप को लिबरेट कर सकते हैं, कैसे प्रेजेंट में रह सकते हैं? So thank you so much for joining today. You can answer in the comment section or you can join our WhatsApp group link as well. So thank you so much.